week is brought to you by Sri Ultra Red Oxide, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Hello and welcome to our special phone-in edition of Market This Week. I'm Sidhant, and in our show we will be taking all your stock-related queries. We are joined by stock analyst NC Maheshwari, who will answer your queries. Our dedicated phone numbers, as always, are 233-866-82, 2309-7620 and 2309-7664. Please prefix 011 if you are calling from outside Delhi. I would request all our callers to please keep the volume of your television set mute while asking your queries. Well, before we take your queries, let's look at what went through the markets earlier this week. The week started with a negative note, and the markets logged their second day of losses for the week. Both the BSE Sensex and CNX Nifty continue to decline for a second consecutive week due to persistent selling pressure following rise in crude oil prices in view of unrest in Iraq. Shares of power, refinery, auto, capital goods and PSU declined due to heavy selling pressure from investors. However, shares of IT and tech firmed up on good demand from investors due to weakness in rupee against the dollar. Key cues for the markets this week were Iraq crisis, Fed tapering, inflation data. The markets are now eyeing the budget 2014 for some direction. So, Mr. Maheshwari, my first question will be, what will be the next cue for the markets? We know the budget is, but other than budget, what will be the cue for the markets? Well, Indian markets are not the exception. I think apart from the budget, monsoon is playing a very havoc to the market. We are not getting any encouraging thing from the market, from the monsoon. So, market is naturally ripe for that thing, and what you have said, that we have already got 30 to 40% increase in the mid cap, PSU, power sector. You see, it was a very bull run for last 2 months. So naturally, correction was set in, so therefore we had a correction. Well, we are getting a first caller. Our first caller is Chandrabhan from Hisar. Chandrabhan जी, बताइए आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्फोसिस सर कितना तक मान लो अब कितने तक निकालना चाहिए सर? Well, Infosys, a stock and a company which has gone through many changes. We have the new person at the helm. So where do you think the stock will go from now? And do you think that the rupee dollar equation, the rupee has gone above the 60 level again? How will it impact the stock? Yeah, I think we are very bullish on the IT sector, not only the IT but all other defensive, including the pharmaceutical. The simple logic is that despite we are expecting lot of foreign remittances in India, but the issue is simultaneously there is a fear of exodus because of the tapering. This week we have seen 10 billion tapering, and we are expecting something more than that. So that is one of the reasons. Second is because of the problem in the Iraq. You see, we are getting large sums from our NRI, whether they are contributing as saving or as investment or in the other shape of the contribution. But once our team is not there, our large labor force is not there, working force is not there, naturally such type of remedies are going to be effective. So we are not expecting any dramatic change in the rupee dollar equilibrium. So it will range the same thing, maybe 58 to 59, not as people were expecting close to 55. So once rupee is stabilized, we are not marking or anticipating a very sharp appreciation in the rupee. So naturally, the stock prices relating to IT are not going to be effective. So then they are going to be directly related with the increase in the worker, increase in turnover and the anticipated in the America. So USA and Europe both are giving an encouraging result. So Infosys, which has got a better outside clients, almost now see their CEO basically based at California. So it means they have got a direct link with the USA government, USA population, USA clients. So I think it is a very good return, and we should continue to invest in Infosys. Okay, we have our caller Sudha from Rohini. So Sudha, tell us what's your query? Sudha, can you hear me? हेलो सुधा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो सर, मुझे ना अनंतराज के बारे में पूछना था। अनंतराज जो शेयर है
हेलो। हाँ हाँ सुधा जी, आपका स्टॉक हमने रजिस्टर कर लिया है सर। या, क्या देखिए, व्यू है? मेरा जो ओरिजिनली शेयर है वो सिरामिक स्पेस है, बट अभी जो उनका जो शेयर्स में मूवमेंट है वो बेसिकली ऑफ दी रियल एस्टेट वैल्यू। रियल एस्टेट में सारे जो शेयर्स हैं बड़े बीट डाउन रहे, लेकिन गवर्नमेंट से ये बहुत आशा है कि इस बजट में कम से कम 2 चीज़ें आने वाली हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बूस्ट करने वाला है। सबसे पहला एक REITs, रियल एस्टेट को किस ढंग से ट्रेड करेगा। इट बिकम्स ए लाइक म्यूचुअल फंड यूनिट। जो रियल एस्टेट की यूनिट होंगी वो भी एक डिनोमिनेशन में चेंज हो जाएंगी, डिमोनेटाइज करने के बाद एक ट्रस्ट यूनिट की तरह वो सेलेबल हो जाएंगी, इंटरचेंजेबल हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि जो फॉरेन फंड्स हैं उनको आने में बड़ा इजी रहेगा, लोकल लिक्विडिटी हो जाएगी। अभी क्या है कि जितनी भी रियल एस्टेट की बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ हैं उनके पास कोई लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी ना होने के कारण उनके प्राइसेस कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर है। तो रियल एस्टेट में नंबर 1, अगर हमें रेट इंटरेस्ट में कोई बेनिफिट मिल जाता है, अगर हमें उनको कोई स्कीम अच्छी मिल जाती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का लिंक्ड विद रियल एस्टेट आ जाता है, वो तो है बजटरी इंसेंटिव। एंड सेकेंड इशू इज REITs, जिस रीड्स के कारण जो एक जिस ढंग से ट्रेड होगा वो इटसेल्फ ही बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो इसलिए अनंत राज का बहुत अच्छा चांस है। एटलीस्ट वी हैव टू वेट अप टू दी बजट, व्हाट इज देयर इन द स्टोर फॉर दिस। वेल नेक्स्ट कॉलर इज शफीक फ्रॉम कश्मीर। शफीक बताइए क्या सवाल है आपके पास? सर मेरे पास 2 क्वेरीज है, एक तो अलोस्टॉम इंडिया ओके, एल्स्ट्रॉम इंडिया, ठीक है। एंड दूसरा CAT सेट। आप अपना स्टॉक रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, दूसरा स्टॉक अपना रिपीट कर सकते हैं? CEAT सेट, सी टायर, TCS, CEAT सेट। TEAT सर, TEAT। we are not able to. Well, we can't get your second stock, but Alstom India. या एल्स्ट्रॉम, यू सी पावर सेक्टर हमने जो बात किया था, अभी पीछे भी बात हो रही थी, पावर सेक्टर पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा बीटन स्टॉक रहा। कोई नई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, उनके प्रोजेक्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, जितने भी बने हैं सेमी बिल्ड हैं या बिल्ड स्टेज पे भी हैं, वो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग। और जो एल्स्ट्रॉम है बहुत अच्छा, जो इलेक्ट्रिक जो अच्छा इक्विपमेंट है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जो सारे ट्रांसफॉर्मर हैं, कंट्रोल है, जनरेशन को कंट्रोल करना है, वो बहुत अच्छी एक कंपनी है जो सप्लाई करती है। सो देयर एल्स्ट्रॉम का जो डायरेक्ट बिजनेस प्लान है वो हमारे पावर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पावर सेक्टर को ग्रोथ आएगी तो उनको भी ग्रोथ आएगी। तो आने वाले टाइम में जिस ढंग से नई गवर्नमेंट का पावर सेक्टर एक वन ऑफ द की प्रायोरिटी है, तो नेचुरली वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले सेक्टर में लाइक BHEL हो गया जो पावर टरबाइंस बना रही है या कर रही है, एल्स्ट्रॉम है, या इस तरह की GE है, इस टाइप के जो ब्रैकेट के शेयर्स हैं उनको एक इजाफा मिलने वाला है। सर मेरे को वो स्टॉक क्लियर हो गया, वो CEAT स्टॉक की बात कर रहे हैं। CEAT टायर या CEAT फाइनेंस। हाँ जी सर, CEAT टायर की बात कर रहे CEAT टायर में देखिए, अगर हम पीछे बात करें तो सारे जो टायर्स हैं, अगर पिछले 1 महीने की बात करें, इन्होंने 10% से 12% तक का इजाफा देखा है। CEAT वाज नॉट द एक्सेप्शन। और अभी भी अगर हम बैलेंस शीट साइज को देखें, अगर हम इसको पीयर कंपैरिजन करें बिटवीन अपोलो टायर, CEAT टायर, MRF, तो हमें लगेगा कि रीजनेबली प्लेस्ड है। लेकिन विसे विस अपोलो टायर की बात करें, अपोलो टायर जो आज 200 रुपये में मिल रहा है, वही आज CEAT ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट साइज़ की बात करें तो दोनों का जो पैट है, दोनों का टर्नओवर है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जो खाली एक प्रीमियम ब्रांड है, जो हमें डिफरेंस मिल रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रीमियम ऑन द ब्रांड ऑफ द CEAT, बट ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। तो टायर है सच में, जो अभी हमने पिछले 6 महीने में जो मेजर कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट है, जो मेजर कॉस्ट है टायर में, दैट इज रबड़। और हमने देखा कि रबड़ कंटिन्यूसली डाउन साइड जा रही है, जिसका बेनिफिट कंज्यूमर को नहीं जा पाया है। तो जितने भी टायर कंपनीज हैं इस समय, दे आर इन ए cycle where they can make extraordinary money because their raw material cost of the rubber is very very low. So that is why whether you put money on CEAT or Apollo Tyre or any other rubber company, you are going to make good money. So our analyst clearly positive on the tire company. Well, we have two callers, one from Ghaziabad and another from Delhi. Manish, Ghaziabad first. आपका सवाल क्या है, बताइए. हेलो, हाय सर, एक्चुअली आई एम होल्डिंग शेयर्स ऑफ यूनिटेक और 35 रुपये 80 पैसे पे है मेरे पास, 1000 शेयर हैं। तो अब मुझे अभी क्या करना चाहिए? अभी मैं इसको, मैंने अभी थोड़ा वो लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्ट किया था अराउंड 6 मंथ्स के लिए। तो अभी मेरी अभी क्या पोजीशन मुझे इससे भाई बना के रखनी चाहिए? सर देखिए, यूनिटेक का हमने एक तरह से देखा जाए आंसर दे दिया है, बिकॉज रियल सेक्टर के सारों के साथ एक ही है। यूनिटेक वाज हैविंग अ वेरी बिग एक्सपोजर ऑन द लैंड एंड द सेम डेट रिटर्न प्रॉब्लम ऑफ विच इज देयर प्रेवलेंट इन ऑल द सेक्टर।
तो जिस ढंग से REITs अगर आ जाती है, अगर रीट्स इस बजट में क्लियर हो जाता है तो नेचुरली इनको एक बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है। अगर वो प्रॉब्लम रहेगी तो वी डोंट थिंक, रादर फिर हमें लग रहा है यहाँ से 5 to 10% करेक्शन भी हो सकती है, बिकॉज जो शेयर्स है वो आप देखें कि 16 रुपये से पहले 35 रुपये हो चुका है, तो ऑलरेडी 100% का इजाफा हो चुका है। एंड दैट इज ओनली बेसिस ऑन द एंटिसिपेशन कि इस बजट में हमें बहुत रिलीफ मिलने वाला है। अगर वो रिलीफ नहीं मिलेगा तो नेचुरली यहाँ से 10% करेक्शन भी हो सकती है। So our analyst cautious on the realty stocks. Our next caller पवन कुमार from Delhi. पवन बताइए अपना सवाल। सर नमस्कार, मैं पवन बोल रहा हूँ दिल्ली के शालीमार बाग से। पवन अपना टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दीजिए। मेरे पास NHPC के 1000 शेयर हैं जो कि मैंने पिछले 3 साल पहले इशू में लिए थे, और अब मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मेरे अच्छे दिन अब आएंगे? NHPC के अच्छे दिन आएंगे सर। देखिए शेयर जो था 17 रुपये से 19 रुपये पे गवर्नमेंट ने बाईबैक किया, 19 रुपये के बाद आज 26 रुपये का करीब रेट आ गया है। तो अगर हम उस परसेंटेज की बात करें, अच्छे दिन की बात करें, तो पिछले 3 महीने में करीब 25% का इजाफा आ गया। वो बात अलग है कि जब इशू प्राइस थी दैट वाज क्लोज टू 32 रुपीज़, तो वहाँ तक अभी हमें पहुँचने के लिए अनदर 6 रुपीज़ की जर्नी को प्राप्त करना है। लेकिन जो ये NHPC का ओवरऑल अगर हम बिजनेस स्टेटस की बात करें, जो हाइड्रो पावर है उसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल छुपा हुआ है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है लोकल सोशल। सोशल है, आप कहाँ पे बांध बनाएं, बांध की क्या हाइट रखेंगे, लोकल जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको कैसे टैकल करेंगे। तो इट इज़ नॉट ए टेक्नोलॉजी इशू, बेसिकली इट इज़ ए सोशो इकोनॉमिक इशू कि हम वो जो सोशल अनरेस्ट है उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। और अभी तक कोई भी गवर्नमेंट किस ढंग से हमें पावर बनानी है हाइड्रो वाली, उसमें कोई व्यवहारिक या कामग्रत जो काम कर सके, रिजल्ट दिखा सके, एक्शन दिखा सके, ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हाइड्रो पावर काफ़ी पिट रही है। लेकिन हमें नई सरकार से आशा है जो कि कमिटेड है टू टेक फास्ट डिसीजन। अगर फास्ट और फोकस डिसीजन लिए जाएंगे तो हमें हाइड्रो पावर से बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, और बहुत ही अच्छी जल्दी हमें लगेगा कि हाइड्रो सेक्टर ने जो थर्मल सेक्टर है उसको और पावर कर दिया है। Well, our next caller is also from Delhi. Sunil, what's your question? सर मेरे कुछ शेयर थे ब्राल फिनटेक करके नाम से। अब रिपीट कर सकते हैं अपना स्टॉक्स का नाम? ब्राल फिनटेक ब्राल सिंटेक्स। और एक मेरा स्टील को गुजरात, इनके बारे में कुछ मेरे को जानकारी नहीं मिल पा रही, ना मेरा इसे अभी डिविडेंड आया है इसमें। सर व्हाट्स योर? देखिए ऐसा है, जिस समय मार्केट चल रही है और मार्केट जिस ढंग से 5000 से प्लस से और 7000 तक आ रही है, तो हमें बेसिक एक इन्वेस्टर जो हमेशा गलती करता है, और मैं जिस बार भी फॉरम पे आता हूँ या फॉरम पे जा रहा हूँ, फॉरम पे मैं यही चीज़ समझाता हूँ कि सेविंग अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। सेविंग ये नहीं है कि आपने पैसा जोड़ लिया तो जरूर नहीं है आपको FD में लगाना है, या आप किसी ने पड़ोसी ने बता दिया कि A शेयर लेना है या B शेयर लेना है और आपने वो शेयर ले लिया। आपको शेयर खरीदते समय कुछ ना कुछ व्यवहारिक पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस कंपनी के प्रमोटर कौन है, उस कंपनी के EPS क्या है, उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर आप उस ढंग के शेयर्स को नहीं ले पाए तो जिस समय बुल फेज शुरू हो रहा है, जैसे शुरू हुआ है, तो हमें उस इन्वेस्टमेंट को क्विट कर देना चाहिए और बड़ी जल्दी हमें टॉप 100 शेयर्स, अगर मान लो शुरू में आदमी काम करता है उसको ABCD करीब हमारे यहाँ 5000 लिस्टेड कंपनीज हैं। अगर हम NSE की बात करें तो करीब 1500 लिस्टेड कंपनीज हैं। तो इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द कंपनीज। सो व्हाट वी कैन डू, we have to take care of at least maybe first 100 companies, maybe first 50 companies। तो जिस ढंग के ग्रुप है जो सिंथेटिक, अभी देखें गुजरात ने टेक्सटाइल के ऊपर बहुत स्पेशल मुनीजा दिया है। अगर जो गुजरात बेस्ड टेक्सटाइल कंपनीज हैं उसमें काफ़ी आपने देखा होगा इजाफा आ गया। आप बात करें अरविंद की, अरविंद का शेयर आज पिछले अपने जो लोएस्ट था उससे करीब 300 टाइम्स बढ़ गया। इट मीन्स 300% मीन्स 3 टाइम्स ऑफ दी ओरिजिनल प्राइस आ गया, क्योंकि गुजरात ने एक पैकेज दिया है। अब वो पैकेज की बात हो रही है टेक्सटाइल मिनिस्टर में, पिछले जो चर्चा आई है कि इसको हम ग्लोबली करने जा रहे हैं, ग्लोबली पूरे इंडिया में करने जा रहे हैं। अगर वही पॉलिसी हमें सारे सेक्टर में मिल जाती है तो टेक्सटाइल को एक बूस्ट मिल जाएगा। और जो आज हमारे यहाँ कॉटन है, जो हमारे यहाँ टेक्सटाइल की एक कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, एक्सपर्टाइज है, पर हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट फिर भी और अलग है, जब प्योरली फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू टेक्सटाइल इज नॉट ए गुड सेक्टर to remain invested. We have better sector, so naturally once we have got a choice we should get it exited right now and go to the well try for better sector. That is the view of our analyst. Well, time for a short break. After the break we have Nirmal from Himachal Pradesh and Nilesh from Goa. एक, दो, तीन, अरे चार। ये काम के समय गिनती किस लिए? कोई खास बात है का? हाँ है ना,
अपने महात्मा गांधी नरेगा में अब बहुत से नए काम जुड़ गए हैं। जैसे वर्मी कंपोस्टिंग और वृक्षारोपण, जैसे मुर्गी और बकरी पालने के लिए शेड बनाना और मछली पालन। और इतना ही नहीं, बाढ़ नियंत्रण और लघु सिंचाई जैसे और भी कई काम। तो खास बात हुई ना। अरे कमाल हो गया भैया, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भैया मैं तो अपने बच्चे की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, 12 पत्थरों को छू कर आऊंगा। तुम भी चलो मेरे। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसका जन्म पंजीकरण करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला परिचय होगा। भाई पंजीयन अधिकारी द्वारा जन्म और जन्म स्थान 21 दिन के अंदर अंदर जन भाई खाते में दर्ज करवानी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भैया मैं तो चला। जन्म बही खाते में बच्चे का नाम, जन्मदिन एवं जन्म स्थान सुनिश्चित करें। वेलकम बैक। वी हैव निर्मल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। निर्मल जी, अपना सवाल बताइए। सर मैंने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा के शेयर खरीदे थे 200 शेयर्स 2950 पे। कंपनी ने बाई बैकिंग किया था 3100 में। तो उसका क्या प्रोस्पेक्ट है कि क्योंकि अभी काफ़ी डाउन आ गया उससे प्राइस से। कंपनी ने अपना इक्विटी बढ़ाया था 75% किया था, तो उसमें अभी 2480 के करीब चल रहा है। Sir, pharma sector has been witnessing lots of volatility. It has been in news for positive as well as negative news. Positive with big deals and negative with the US FDA bans. What do you think the future of this sector and the specific stock which the caller has asked? I think when we are investing in a pharmaceutical sector, there are three issues which we have to take an overall position while taking the pharmaceutical sector. The first of all is the equity or the scrip itself. Scrip itself is not good. Even if we go at this price from 3,000 plus to 2,400, it is a good script. That is not the issue. The second issue is the problem in the pharmaceutical sector is trade wars. Basically, our exporters are exporting the medicines or drugs at a price which is much cheaper than the global price. So companies across the globe are naturally fearing and having a fear of the Indian exporter. So whatever the issue has been raised, they may not be totally justified. There may be an issue. There may be issue in quality. There may be issue in testing. But you see, all of the good companies are facing the same problem. Whether their issue is of their rejection, issue of their licensing, issue of their approvals. Why? So probably issue has to be cleared not alone from the manufacturer side. I think government has a big role here to play. You see, it is a fight between the importer and the exporter, between a company which is allowing a production at much lower price when the local price where the goods are produced at much higher price. So government has to give a support to the pharmaceutical sector, then only this sector can grow. That is the first. Okay. The second issue is because of the limited issue, what are the overall chances for that? The continuing and keeping in view at the array, he can continue to stay invested in his shares because I am very bullish on the pharmaceutical sector as well as the IT sector. Well, bullish on pharmaceutical sector and the IT sector, and we are joined by Nilesh from Goa. Nilesh, tell me, what's your question? Nilesh, can you hear me? Nilesh, are you there? Well, if Nilesh is not there, Sanjay from Bangalore. Sanjay, can you hear me? And if you can hear me, tell me your question. Well, we'll go to our callers, but let's talk about the rail stocks. Earlier this week, the rail minister talked about FDA in the sector. Also on Friday, we saw a huge price rise, passenger fare 14%, also rise in the freight rates. Where do you think the rail stocks will grow? I think I am observing the rail stocks for last 5 years, and we found that these are a very, very short-term stocks. Just in anticipation of the budgetary movement, we are saying whether it goes over the Kalindi, whether it is tax macro, tax rail, and other stocks which are linked with the railway budget. We are getting a very good price jump and all that. But once the budget is out, we have never found any sustainability in those subjects and those stocks. So therefore, I don't find any logic. If you are a short-term trader, you can take a position, but you have to quit before the budget because of various reasons. The
real health of our railway is not good. Last 5 years we have seen. Well, I think we have got Nilesh back. Nilesh, can you hear me? And if you can hear me, give your question. Hello. Yeah, Nilesh, put your question. Hi, this is Nilesh here from Panji, Goa. I want your view regarding Union Bank for at least 3 months to 6 months. Union Bank, sir? For Union Bank. Union Bank. I think very good. I think a different subject, banking. So far we have not discussed. I was about to go on the banking sector. So good. Nilesh has asked banking. I think Indian banks are exception to the one. World over, bank stocks are not liked by anybody. They have seen the beating from all angles because of X issue, Y issue, subprime crisis, or maybe the dollar, or maybe the carry trade. So all the times banking stocks were never preferred. But in India, there are two reasons why the banking stocks are getting preferred. One is that they have got a strong backing by the government. In most of the bank, almost close to 70% holding is by the government. So people are at least assured that banks are not going to be bankrupt or something like that. The second major issue, which is the real hidden wealth in the banks, is their exposure to the insurance companies. Like you say, take care of the State Bank of India, HDFC, or even ICIC, or any other bank. They have directly or indirectly have promoted the insurance company. And now private insurance companies have already converted a sizable business. Sooner or later, these companies are going to be public. They are going to be listed. Then a lot of money, lot of value will be created in these stocks. So whoever a bank stock, wherever a bank stock has got some tie-up with the insurance company, naturally it has got a very good buy. That is the overall process of buying the banking stock. Now coming to specifics of Union Bank and all that, we have seen there is a continuous slow but steady growth in this sector. So I am still recommend to hold on this share. So our recommendation, hold on to that stock. Well, last caller, Sanjay from Bangalore. Sanjay, what's your question? My question is with regard to Jammu and Kashmir Bank. Well, another stock, well, banking stock. Jammu and Kashmir is one of my most favorite stock, in the sense that you see, if we just analyze the stocks and the loans and borrowing power and overall structure of this stock, you will find that very substantial deposit from J&K are coming to this bank only. So it is a bank where we have real strength, because there is no loan, hardly any advances, but there is a very sizable deposit. So we will find if they are already starting on the technology. So we are just left by almost like 1 minute. So very good. We will say continue. Continue with your stock. 1 minute we are left. One last and final question. Your outlook for the market next week, given the fact for last 2 weeks the markets has been consolidating in a sense, and there have been lots of news which has been negatively impacting the market. Yeah, we have got a very small breeze of 40 points. If we go by Nifty, if Nifty is able to break 7480, then we are feeling another 200 point down. So next week may see if we get stabilized, and 90% chances are that Nifty is going to stabilize. We have got around 40 points to go down. So if closing basis, if Nifty close below 7480, then we can another selling spree here. But if not, we'll see a rise again and we'll go another 7700 only. Well, thank you so much. Well, that was a stock analyst giving answers to your queries. Thanks for watching this edition of Market This Week and investing your time with us. Namaskar. Market This Week was brought to you by Sri Ultra Red Oxide.